Hello everybody, this is Vipul Purohit and I welcome you all to my YouTube channel. My dear friends, we are now into the second part of non-aqueous solvent. The second part, as you can see over here, we are going to discuss about the properties of the solvents. So, we begin with the very first property, my dear friends. And yes, it is melting point and boiling point. My dear friends, when we talk about melting point and boiling point, we actually come to know about the temperature range over which the solvent is going to exist in the form of a liquid. This is the most important information that I get when I come to know about the melting point and the boiling point, because I need to know that what should be the physical state of the substance. Now, whenever we talk about a solvent, the first thing which comes into our mind, and that is, it has to be in a liquid state. And then when I heat a liquid at one particular point of time, it gets converted into a vapor state. तो मुझे दोस्तों पता होना ज़रूरी है कि कौन से टेम्परेचर तक वो सॉल्वेंट लिक्विड की तरह एग्जिस्ट कर सकता है, और उसके बाद ही we can decide कि whether a particular solvent can be used in a particular chemical reaction or not. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा. Everybody knows कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. अगर मुझे केमिकल रिएक्शन करना है which takes place at around say 700 डिग्री सेल्सियस, तो मैं वहाँ पर वाटर को यूज़ नहीं कर सकता हूँ एज अ सॉल्वेंट, क्योंकि 700 डिग्री सेल्सियस पे तो वो वेपराइज हो जाएगा. आई बात समझ में? सो दिस इज द इंपॉर्टेंस, माय डियर फ्रेंड्स, ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट बिफोर वी एक्चुअली यूज दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट इन अ केमिकल रिएक्शन. ओके, सो इससे टेम्परेचर रेंज का हमें पता चलता है. अब कुछ हद तक हम टेम्परेचर रेंज को बढ़ा सकते हैं. ओके, दिस टेम्परेचर रेंज वी कैन इंक्रीज. कैसे कर सकते हैं हम लोग? बहुत सरल है, एंड दैट इज वी कैन कैरी आउट द रिएक्शन. You carry out the reaction at a high temperature, at a high pressure. अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा उसमें? अब बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज. ओके, बिकॉज हाई प्रेशर रिजल्ट्स इन अ increase in the boiling point. This is what you can do. Another possibility that can be done is, and that is by addition of a diluent into the solvent. Okay, addition of what? A diluent into the solvent. Suppose now we have a non-aqueous solvent and we have a solvent which can be miscible in water. So I can add more amount of water into it. Okay, if it is miscible, if it is miscible. Sometimes what happens is it is immiscible, then you cannot use it. Okay, so addition of a diluent can result in a decrease in the freezing point. Alright, this is what are the possibilities by bringing about changes in the temperature range. First is, when I'm talking about a liquid, I want to carry out the reaction at a high temperature. Then what I need to do is that I will increase the pressure so that the boiling point will increase. Okay, so that I can use that solvent over a longer temperature range as compared to that reaction which was taking place at a low pressure. और दूसरा क्या है, मैं डाइल्यूट ऐड कर सकता हूँ उसमें सॉल्वेंट में, ताकि फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो सकता है. यानी जब मैं डिक्रीज इन टेम्परेचर की बात करता हूँ तो मैं काफ़ी लो टेम्परेचर तक जा सकता हूँ अगर मैंने डाइल्यूट का इस्तेमाल किया. ओके, और अगर मैंने रिएक्शन हाई प्रेशर पे किया तो फिर मैं उस लिक्विड को और ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट फिर बढ़ जाएगा एट हाई प्रेशर. Okay, this is, my dear friends, the first property, and that is melting point and boiling point of the solvent. Okay, I hope you have understood up to this. The next property, my dear friends, that we go into, and that is about the heat of fusion and heat of vaporization. So first of all, my dear friends, I will explain you the definition of that, and then we will relate with that of the solvents. So here we go. The first one is heat of fusion. We symbolize this as delta FH. It is, in simple words, the change in enthalpy
when 1 mole of a solid is converted to liquid. This is called as enthalpy of fusion, a process of conversion of a solid to a liquid state. Next we have is heat of vaporization. In simple words, this is the change in enthalpy when 1 mole of a liquid is converted to gas. So conversion of a solid to liquid is fusion, and conversion of liquid to gas is vaporization. And my dear friends, you need to remember, and that is, okay, whether we talk about enthalpy of fusion or we talk about enthalpy of vaporization, both of which is directly proportional to the intermolecular force of attraction. So it means that if the intermolecular force of attraction is greater, then obviously the enthalpy which required, the total heat which is required for converting a solid to liquid or a liquid to a gas is going to be higher. Okay, so it's directly proportional. We also have one more parameter, my dear friends, and that is the ratio of the enthalpy of vaporization to the boiling point, which is expressed in terms of Kelvin. This is known as a Troughton constant. This is known as Troughton constant. And generally, the liquids, the normal liquids, have a value of Troughton constant as 90 joules per Kelvin per mole. This is what the units is. Okay, joules per Kelvin per mole, because the enthalpy of vaporization is expressed in terms of joules per mole, and this boiling point is in terms of Kelvin, and therefore the unit is joules per Kelvin per mole, and its value is going to be around 90. Now, Troughton constant, if it is higher, that means I write it down over here, it is going to be higher, it resembles association of the molecules. That means bond formation of the molecules. I can give you some examples, and that is like water molecules get associated with each other. Next is we have got ammonia molecules getting associated with each other. We have got HF, that is hydrogen fluoride molecules getting associated with each other by means of intermolecular forces of attraction. Alright, so this is about, my dear friends, heat of fusion and heat of vaporization. And then we need to remember about the Troughton constant and how we relate. It's directly proportional in simple sense, that is the strength of the forces of attraction existing between atoms in a molecule as well as between different molecules. Alright, so I hope you have understood up to this very well. My dear friends, we move on to the next property, and that is about polarity. Now, what is polarity in simple sense? Polarity, my dear friends, is all about charges. Okay, positive charge as well as negative charge. Now, this polarity is expressed in terms of two important parameters. One is called as dipole moment, other is called as dielectric constant. Okay, मैं एक बार और बता देना चाहूँगा. पोलारिटी का मतलब होता है चार्जेस. ओके, बैटरीज देखा होगा आप लोग ने. सो वन पोल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर पोल इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, एंड दैट पोल बिकम्स अ डाइपोल. सो पोलारिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट एज वेल एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसलिए हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे कि पोलारिटी इज प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट and directly proportional to dielectric constant. ओके, ये आपको याद रखना है. अब हम बात करेंगे about dipole moment. Now, in simple sense, when I talk about dipole moment, it's basically the distance into charge. Distance between the oppositely charged species multiplied by what? Charge. This is called as dipole moment. अब देखो, ये डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी. सो ऑब्वियसली हम ऐसा बोलेंगे कि इफ द डाइपोल मोमेंट इज हाई, देन वी से द पोलैरिटी इज गोइंग टू बी हाई.
Okay, so it is the product of the distance and the charge. Now when I talk about dielectric constant, now what is a dielectric constant is? Dielectric constant का मतलब ये होता है कि it is the distance between the oppositely charged ions. It is the distance between the oppositely charged ions such that the applied external electric field is neutralized. Neutralized का मतलब क्या होता है? Cancelled. अब देखिए दोस्तों, जब तक आयन्स एक दूसरे के संपर्क में है, they are dependent on each other. There is going to be a flow of electric field. So if I want to cancel that electric field, in simple words, what I need to do is I need to make sure that there is separation taking place of the ions. And the extent of separation of the ions is determined by means of dielectric constant. So greater is the separation, greater is the dielectric constant. अब दोस्तों separation अगर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा है, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, और इसीलिए मैंने इस तरीके से रिलेट करके दिया है आपको कि अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, द पोलैरिटी भी ज़्यादा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. सो दिस इज़ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स द बेसिक्स कि क्या मतलब होता है पोलैरिटी का, डाइपोल मोमेंट का और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का. ओके, उसके बाद वी गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज कि जब हम एक आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं, सो फॉर आयनिक कंपाउंड्स आप जानते हो इट इज़ मेड अप ऑफ आयन्स. सो अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें, सो F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन ER स्क्वेयर. ओके, दिस इज व्हाट इज द फॉर्मूला, जहाँ पर F क्या है, इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन existing between the two ions. Q1 is the charge of the cation. Q2 is the charge on the anion. ओके, cation का चार्ज पॉजिटिव होता है और anion का चार्ज नेगेटिव होता है. E is a dielectric constant and R is the distance between the two ions. ओके, मैं एक बार वापस से दोहराता हूँ. F stands for the force of attraction between the two ions. Q1 is the charge on the cation. Q2 is the charge on the anion. E is the dielectric constant and R is the dipole moment. ओके, अभी एक बात याद रखिएगा कि जब हम सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, फॉर सॉल्युबिलिटी द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी लेस. अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं कि व्हेनेवर आई टॉक अबाउट अ सॉल्यूट गेटिंग डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं NaCl का. आप सब लोग जानते हो कि नमक पानी में आसानी से डिसॉल्व होता है. अब नमक में बॉन्ड है, NaCl में बॉन्ड है, दैट इज NaOCl के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज एन आयनिक बॉन्ड. अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि अगर नमक को पानी में डिसॉल्व होना है तो उसके बॉन्ड का टूटना जरूरी है. रिमेंबर दिस, फॉर एनी सॉल्यूट टू बी डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, इट्स बॉन्ड मस्ट ब्रेक. If it breaks very quickly, we say it's easily soluble. If it breaks after some time, I call it as sparingly soluble. And if it doesn't break at all, then I call it as insoluble. All right? So that bond has to break. And what is that bond is? Force of attraction. So for solubility, okay, the bond will break only when the force of attraction is less. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है तो वो टूटेगा ही नहीं, और टूटेगा नहीं तो वो सॉल्युबल होगा ही नहीं. इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि फॉर सॉल्युबिलिटी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मस्ट बी व्हाट? लेस. सो द बॉन्ड हैज टू बी वीक so that it will break easily and therefore it will be easily soluble. Okay? ये सब मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? Ionic compounds. अब force to be less, मैं क्या बोलूँगा? The E should be high. इनके F and E are inversely proportional. So the value of E must be high. What is E stands for? Yes, it's the dielectric constant. Okay? So dielectric constant should be high. अब यहाँ पे देखिए आप, dielectric constant high, तो obviously dipole moment also has to be high. क्योंकि R is related to distance, ये देखिए, and distance is directly proportional to dipole moment. तो R value should be what? High. तो ही तो F value will be less. Okay? So इस तरीके से आप देख सकते हो कि अगर F value is less, the E value is going to be high, the R value also is going to be high, and that means we say that ionic compounds will dissolve in solvents where we say the polarity is high,
द डाइपोल मोमेंट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ dm, द dm इज हाई एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में dc लिखता हूँ, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाई। ठीक है, क्योंकि ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और इसी वजह से दोस्तों नमक NaCl, द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन यू लर्नड अबाउट आयनिक कंपाउंड्स यू लर्नड अबाउट NaCl. Okay, so NaCl easily soluble in water and water is a polar solvent. Water का dipole moment is high, water का dielectric constant is high और इसीलिए नमक आसानी से पानी में dissolve होता है। आई बात समझ में? So that means the polarity is going to be high, the dipole moment is going to be high, the dielectric constant is going to be high and this the ionic compound will dissolve in such solvents. आई बात समझ में? Okay, I guess यहाँ तक concept clear है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम solubility को एक दूसरे पहलू से देखेंगे। ओके, वी विल लुक इनटू द solubility from a different perspective, and what is that perspective that I will tell you, and that is also very simple. I'm going to talk about solubility in terms of two parameters which I'm very sure you must have heard before as well, and that is, one is going to be called as lattice enthalpy or lattice energy, and the other one is solvation energy. Now what are those? I'll explain you, no worries about it. Lattice energy is the energy released when oppositely charged ions comes closer for bond formation. जब आयंस ऑपोजिट चार्ज आयंस अब एक दूसरे के करीब आएंगे तो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी हासिल होगी, स्टेबिलिटी हासिल होगी तो एनर्जी कम होगा, और एनर्जी कम कैसे होगा? एनर्जी रिलीज होने से, और इस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी इज द एनर्जी एसोसिएटेड व्हेन अ सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। अब दोस्तों यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दैट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। समटाइम्स द एनर्जी इज रिलीज्ड एंड समटाइम्स द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। ओके, इसलिए मैंने रिलीज एब्जॉर्ब ये वर्ड यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपल वर्ड यूज़ किया है कि एनर्जी एसोसिएटेड व्हेन द सॉल्यूट गेट्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सॉल्वेशन एनर्जी। नाउ एक कंडीशन याद रखिएगा दोस्तों, द कंडीशन इज फॉर सॉल्युबिलिटी, फॉर सॉल्युबिलिटी द सॉल्वेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी सॉल्वेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, या हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं हम लोग, इफ वाटर इज अ सॉल्वेंट देन आई यूज द वर्ड हाइड्रेशन एनर्जी, बट अदर देन वाटर इफ देर आर सॉल्वेंट्स, क्योंकि द नेम ऑफ द चैप्टर इज नॉन एक्वियस सॉल्वेंट, सो वी यूज सिंपल द वर्ड इज, जनरल वर्ड इज सॉल्वेशन एनर्जी। आई बात समझ में? सो वेन एवर द सॉल्वेशन एनर्जी एक्सीड्स द लैटिस एनर्जी, then we say that the solute gets dissolved in the solvent. Okay, so this is for solubility. This is what the condition that you need to keep in mind. Okay, and it is being observed that whenever I consider ionic solute with a polar solvent, and when I consider a covalent solute with a non-polar solvent, generally, please my dear friends, it's not always, but then generally I have observed this condition. Exceptional cases are there, my dear friends, but then generally this is what the condition is being considered, that ionic solute, when it is treated with a polar solvent, then the solvation energy is greater than the lattice energy, and therefore we conclude that ionic solute is soluble in polar solvents. Similarly, when I'm going to treat a covalent solute with a non-polar solvent, once again I find solvation energy is greater than lattice energy, and therefore we say covalent solutes dissolves in non-polar solvents. Okay, and therefore we say polar solvent is a better solvent for ionic solutes, and non-polar solvent is a better solvent for covalent solutes. Okay, ये आपको याद रखना, लेकिन मैं वापस से बोल देता हूँ, I stress on this statement and this is general. ओके, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं अबाउट सॉल्युबिलिटी। ओके, हम तो सॉल्युबिलिटी को एक ही पर्टिकुलर पहलू से देखते हैं, वी आर लुकिंग इनटू दिस कंसेप्ट ओनली विद वन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। ओके, सो दिस इज जनरल।
Okay, and on the basis of this, we write a principle, and that is like dissolves like. Now what is this like and like over here? आपको सबको पता है कि सल्यूट एंड सॉल्वेंट की जब हम बात करते हैं तो सॉल्वेंट डिसॉल्व्स द सल्यूट, हम ऐसे लिखते हैं ना हमेशा, सॉल्वेंट डिसॉल्व्स द सल्यूट। नाउ मैंने क्या किया है, यहाँ पे सल्यूट को रिप्लेस किया बाय लाइक, और यहाँ पे सॉल्वेंट को भी रिप्लेस किया बाय लाइक। नाउ लाइक मतलब वो आपका इंस्टाग्राम फेसबुक वाला लाइक नहीं, यहाँ पे लाइक मतलब सिमिलैरिटी। ओके, आप देख सकते हो आयनिक सल्यूट मतलब चार स्पीशीज, पोलैरिटी मैंने बताया था कि इट इज चार स्पीशीज, तो चार्जेस, तो दोनों सिमिलर है एंड देयरफॉर डिसॉल्व्स। सिमिलरली कोवेलेंट कंपाउंड्स, ओके, वहाँ पे चार्ज इज लेस, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा चार्ज इज जीरो, आई विल से द चार्ज इज लेस। ओके, नॉन पोलर में भी चार्ज इज लेस, सो सिमिलर एंड देयरफॉर डिसॉल्व्स। आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सिमिलर सल्यूट, इफ द सल्यूट इज चार्ज, द सॉल्वेंट इज चार्ज, देन द सल्यूट विल गेट डिसॉल्व्ड। Okay, agar solute is chargeless, the solvent is chargeless, then also the solute will get dissolved. Okay, if the solute has got a high charge, solvent has got a less charge, then it will not dissolve, क्योंकि वो फिर like नहीं है, वो similar नहीं है। Okay, तो इसी से दोस्तों मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट का आखिरी लाइन लिख देता हूँ, एंड दैट इज हम बात करेंगे अबाउट द पोलैरिटी पर। तो पोलर सॉल्वेंट्स आर better for ionic solutes, और उसी तरीके से नॉन पोलर सॉल्वेंट्स आर बेटर फॉर कोवेलेंट solutes. Okay, they are better for covalent solutes. I hope you have understood up to this very well. Yes, my dear friends, now we move on to the next property, and that is viscosity. दोस्तों viscosity में अगर हम बात करें तो simple words में what is viscosity is the opposing pressure या opposing force acting on a liquid which prevents the flow of the liquid, उसको हम लोग बोलते हैं viscosity, the opposing force which is acting on the liquid, ताकि वो लिक्विड को आगे फ्रीली जाने नहीं देगा, that is called as viscosity. Now viscosity, how it affects? It not only affects the chemical reaction, but it also affects the physical processes. Okay, it is directly related to the rate of the reactions, the speed of the reaction. ओके, उसके साथ जुड़ा हुआ है वो, क्योंकि वो आगे जाने से रोकेगा लिक्विड को। तो ऑब्वियसली द फ्लो इज प्रिवेंटेड, उस लिक्विड के मीडियम में द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो इफ द लिक्विड इज फ्लोइंग विद अ वेरी स्लो स्पीड, सो ऑब्वियसली द केमिकल रिएक्शन विल ऑल्सो टेक प्लेस स्लोली, एंड इसलिए विस्कोसिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू व्हाट, द रेट ऑफ रिएक्शन। और जैसे मैंने बोला था कि मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि प्रोसेसेस है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन है, हाँ, प्रेसिपिटेशन है, these processes behave in a medium, they much more preferred to behave in a medium with low viscosity, क्योंकि अगर viscosity is less तो क्या होगा, the liquid will flow very fast, the opposing pressure is less, the opposing force उस लिक्विड के ऊपर कम है, इसलिए वो लिक्विड ज़्यादा फ्लो होगा, और अगर ज़्यादा फ्लो हुआ, जल्दी से फ्लो हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जल्दी होगा। इसलिए न केवल केमिकल रिएक्शंस, लेकिन जब फिजिकल प्रोसेसेस है, जैसे मैंने आपको बोला है, क्रिस्टलाइजेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ, दे प्रिफर to take place in a medium which has got low viscosity. Okay, the best example is water. आप जानते हो अच्छे से कि water का viscosity is less, और इसी वजह से water is a free flowing liquid. Okay, my dear friends, so this is what we need to talk about with respect to viscosity, and this is what we talk about with respect to the properties of the solvents, जहाँ पर मैंने आपसे बात की थी melting point और boiling point के बारे में। फिर मैंने आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था डाइपोल मोमेंट, पोलैरिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। फिर हमने बात की अबाउट विस्कोसिटी।
Alright, so these are the properties of the solvents and I'm very sure आपको ये सब समझ में आ गया होगा.